33 সংখ্যক NVS নেশ্যনেল স্পৰ্টছ মিট আৰম্ভ জিপাল বিশ্বনাথৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণ 8টা ৰিজনৰ 240 গৰাকী খেলুৱৈৰ সমাৱেশ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত অৰ্জুন নয়নমণি শইকীয়া সোমবাৰৰ পৰা বিশ্বনাথৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত 3 দিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে 33 সংখ্যক NVS নেশ্যনেল স্পৰ্টছ মিট টেবল টেনিছ ইভেণ্টৰ বাবে অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিলে দেশৰ 8টা ৰিজনৰ টেবল টেনিছ খেলুৱৈয়ে 14, 17 আৰু 19 বছৰৰ ছিংগলছ আৰু ডাবলছ শাখাত ল'ৰা-ছোৱালী উভয়ে দাঙি ধৰিছে ক্ৰীড়া প্ৰদৰ্শন 8টা ৰিজনত আছে 630খনতকৈ অধিক জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় মুঠ 8টা ৰিজন ক্ৰমে শিলং লক্ষ্ণৌ ভূপাল চণ্ডীগড় হায়দৰাবাদ জয়পুৰ পাটনা পুনেৰ 240 গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই প্ৰতিযোগিতাত এই টুৰ্ণামেণ্টৰ পৰাই আগন্তুক SGFI প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰা হ'ব খেলুৱৈ প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল অৰ্জুন নয়নমণি শইকীয়া বিশ্বনাথ জিলাৰ অতিৰিক্ত জিলায়ুক্ত ডক্টৰ সংগীতা বৰঠাকুৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় বিশ্বনাথৰ অধ্যক্ষ ৰাজেশ কুমাৰ বৰ্মা জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় লখিমপুৰৰ নৰেশ্বৰ আলী আদি বিশিষ্ট ব্যক্তি NBS हेडक्वार्टर के द्वारा शिलोंग रीजन और स्पेशली JNV विश्वनाथ को टेबल टेनिस गेम का आयोजन नेशनल लेवल आयोजन करने का मौका मिला। मैं NBS के जो भी ऑफिसर्स जिन्होंने ये जिम्मेदारी JNV विश्वनाथ के ऊपर दी है उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये सोच करके कि JNV विश्वनाथ जो है वो इस गेम को अच्छे से कराएगा और सक्सेसफुली हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको कंडक्ट कराने के लिए। इसी मौके पर हमने अप्रोच किया MS नयनमणि शइकिया गोल्ड मेडलिस्ट इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 एंड आल्सो अर्जुना अवार्डी कि वो हमारे निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। मैडम आपका वेलकम है, स्वागत है। जिस तरह से आज बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्म किया भारत के विभिन्न स्टेट से आए हुए हैं और गर्मी भी बहुत है बट उसके बावजूद उन लोगों ने बहुत अच्छे से वो तैयारी भी की है परफॉर्म भी किया है तो वो देखकर बहुत अच्छा लगा और इस प्रोग्राम में यहाँ पर उपस्थित होकर हम खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं जो हम लोग जानते हैं कि गेम पढ़ाई के साथ साथ अगर हम लोगों का पूरा मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होना है तो हम लोगों को बच्चों को इस खेल की तरफ भी हम उन लोगों को वो जितना आगे बढ़ाकर ले जाएंगे उतना ही मतलब उन लोगों का विकास होगा क्यों एक्सपेरिमेंट में विथ ट्रूथ में महात्मा गांधी में भी बोला है कि जब वो फिजिकल एक्सरसाइज से एग्जेम्पशंस आते थे बाद में उनको भी इसका उपकारिता का मतलब समझ में आ गया था। प्रचंड गरमको नेउसी मुकली खेलपथाৰত সমবেত হোৱা খেলুৱৈসকলে উপস্থিত অতিথিসকলক পেৰেডেৰে অভিবাদন জনায়। জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ আৰু প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা খেলুৱৈৰ নিয়ম শৃংখলা তথা দায়বদ্ধতা প্ৰত্যক্ষ কৰি অভিভূত হৈ পৰিল কমনৱেলথ গেমছৰ স্বৰ্ণজয়ী লোন বল খেলুৱৈ অৰ্জুন নয়নমণি শইকীয়া ভাষণত তেওঁ খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰি কয় এনেদৰে बाहर से हो या आसाम से हो कंपटीशन के लिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि हम लोग अगर कंपटीशन करेंगे सभी को मेडल नहीं मिलेगा जैसे कि पढ़ाई में एक ही क्लास को 10 जन को फर्स्ट डिवीजन मिल सकता है लेकिन गेम में 10 जन को गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा तो इसीलिए किसी को भी बुरा मानने का या बुरा फील करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गेम होता ही ऐसे है। आप लोग जितना हो सकता है आप लोग अपना एक्सपीरियंस लेके वापस जाने के लिए कोशिश कीजिए क्योंकि बाद में काम आएगा आप लोगों को। पहले आप लोगों को कंपटीशन करने से पता चलेगा कि कंपटीशन होता है क्या। जब आप हार जाओगे या जीत जाओगे
जीतने वाला को भी बहुत खुशी होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको आगे भी जाना है, प्रैक्टिस बरकरार रखना है। तो इसीलिए जो हारता है उसको दुखी होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं। उल्लेख्य যে প্ৰতিযোগিতাখনত দায়িত্ব পালন কৰে 8টা ৰিজনৰে টিম মেনেজাৰ 24 গৰাকী এস্কৰ্ট টিজাৰ ক্ৰীড়া সংগঠক দিয়ে। প্ৰতিযোগিতাখন নিৰপেক্ষ আৰু সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ চিফ ৰেফাৰী হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে NIS প্ৰশিক্ষক গোবিন্দ উপাধ্যায়ক। তেওঁৰ সৈতে সহযোগী ৰেফাৰী হিচাপে আছে ৰিংকুমণি ডেকা আৰু দেৱজিৎ দত্ত। তদুপৰি আছে 13 গৰাকী আম্পায়াৰ। জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় বিশ্বনাথৰ শিক্ষক দীপেন মহন্তৰ সম্পূৰ্ণ নিৰীক্ষণত সৰ্বাংগ সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনৰ মেচসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছে বিদ্যালয়ৰ গাতে লাগি থকা কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা সাফল্যমণ্ডিত হওক 33 সংখ্যক NVS নেশ্যনেল স্পৰ্টছ মিট। এনে প্ৰতিযোগিতাৰ আচলত ধৰি ক্ৰীড়াংগনত দুপে আগুৱাই যাওক দেশৰ 8টা ৰিজনৰ অন্তৰ্গত জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট গগো স্পৰ্টছ এনি। ফিজিকেল এডুকেশ্যন বিষয়ত ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰণে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন শিক্ষানুষ্ঠান অভিৰুচি ইনষ্টিটিউট অৱ ফিজিকেল এডুকেশ্যন। 2 বছৰীয়া ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ BPEd পাঠ্যক্ৰম আৰু 4 বছৰীয়া BPES পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে নামভৰ্তি চলি আছে। বিতংকৈ জানিবৰ বাবে আজি যোগাযোগ কৰক। যোগাযোগৰ নম্বৰসমূহ হৈছে 9435100098, 7002 33540, 88765210098, ৱেবছাইট www.aipguwahati.in।